आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ एन IVF साइकिल फेलियर। क्या वजह होती है एक IVF साइकिल फेल हो जाती है? वी ऑल नो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ वेरी टैक्सिंग बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली, even I would say for patients as well as for a doctor. Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. क्या वजह हो सकती है कि जब हमने सब कुछ कर लिया, हमने एग्स निकाले, एम्ब्रियो बनाया, we have put it inside the uterus, then why did it fail? It is really a very big question, both for the patient as well as the doctor. I would like to explain you the dynamics or the physiology, how the things they happen. When we are taking out the eggs, the most important thing is the quality of the egg. अगर एग्स की क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम है, जो कि वो एग्स जब बाहर आ जाते हैं तभी पता चलता है, क्योंकि when we look under the microscope and then only we can see the actual eggs. अल्ट्रासाउंड में जो हमें दिखाई देते हैं, those are called as follicles. Many a times patient is like कि okay नहीं follicles आपने कहा था eggs अच्छे बन रहे हैं, then how is it that after now the embryos you are saying that eggs are not good? So the things which are visible in an ultrasound is actually a follicle. Follicle contains a very small microscopic egg inside it. Usually one follicle has one egg inside it. Many a times it happens when we are taking those eggs out of the follicles, we find out that sometimes some follicles are empty also. तो जब हम उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और ट्राई करते हैं कि इसमें से एग मिले, many a times there is no egg. And even when many times when we get an egg, there is a possibility कि जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, quality may not be that good. Then only we can tell you कि okay, what is the actual scenario. Then we try to make embryos, whatever eggs we have gotten. अगर एग्स की क्वालिटी अच्छी है बट स्पर्म्स की पुअर हो गई है, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो जो एम्ब्रियो बनेगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा. उसकी हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड ऑन एन एवरेज. इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन अ लेमैन टर्म, तो अगर C ग्रेड एम्ब्रियो है देन डेफिनेटली चांसेस ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी यूजिंग अ C ग्रेड एम्ब्रियो आर नॉट वेरी गुड. सो वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसफर A ग्रेड एम्ब्रियोज और B ग्रेड एम्ब्रियोज. बट अगर कुछ भी नहीं है, वी हैव ओनली लेफ्ट विद द C ग्रेड एम्ब्रियोज, देन वी डू ट्रांसफर दोज ऑल्सो, बिकॉज मेनी अ टाइम्स रेयरली प्रेगनेंसी डू अकर. And pregnancy baby is fine or not, we usually check during the pregnancy, so as such there is no issue with the baby's growth or something. So one most important thing or the reason for the failure of an IVF cycle can be the grade of the embryo. Agar grade was A and to I would say day 5 blastocysts were transferred, even then the pregnancy has not occurred. Now next our question comes to the uterus. So what about the lining of the uterus? Many a times again patients they say कि आपने तो बताया था कि thickness अच्छी है, lining inside his uterus is good, but again it is just a measurement of the thickness of the lining. Many a times I have seen when people come from remote areas, they have undergone multiple IVF cycle failures and then they come reach Delhi and they get it done from us. Then we find out कि though the uterus was looking good, the thickness was looking good, but at the molecular level if we see, the thick lining inside the uterus was not ready for the embryo when that embryo was actually transferred. So in that scenario what happens, if we say it in the layman term again, sometimes uterus may be a bit slow, sometimes it may be a fast. So when we are transferring an embryo of day 5, the uterus may not be ready for that. या तो वो आउट ऑफ फेज जा चुका है या अभी वो फेज में आया ही नहीं है. इस चीज़ को या फिर इस सिनेरियो को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एरा. एरा स्टैंड्स फॉर ERA, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे. इट टेल्स अस कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने वाले थे उस वक्त यूट्रस के अंदर की लाइनिंग वॉज इट रेडी और हाउ लॉन्ग वॉज इट, वॉट वॉज द ड्यूरेशन विच वॉज लेगिंग बिहाइंड, और हमें नेक्स्ट ट्रांसफ़र कब करना चाहिए. दिस टेस्ट टेल्स अस कि व्हाट इज शुड बी द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रांसफ़र. सो अगर आपके मल्टीपल IVF फेलियर्स हैं और आपके एम्ब्रियोज A ग्रेड के थे, even then your cycle has not been given you a positive result, then in that scenario go for a test called ERA and
Mostly we have found out that there is some reason behind it, and when we correct it in the next cycle, we are able to get a positive result in the immediate next cycle transfer. So don't worry, and definitely visit your nearby clinic to get yourself examined and get yourself tested what was the reason of the IVF failure. If you have any further queries, you can leave your queries in the comment section. We will be delighted to help you out. Thank you. Take care. Bye.